नमस्कार आदाब। टुडे इज़ वर्ल्ड एड्स डे। जब हिंदुस्तान में HIV एड्स की कोई बात भी नहीं कर रहा था, it was us, YRG CARE, that not only raised its voice but also brought about the change that it wanted to see, and we continue to work towards it. We've been working tirelessly for more than 2 decades, and we're all over the country, namely 25 states and union territories, and the journey continues. YRG CARE has become a beacon of hope for the marginalized communities and various people who look up to it by providing essential services of counseling, testing and treatment. And we continue our journey. इस पहली सिलसिले में कह सकते हैं कि हमारे साथ 4 eminent guests मौजूद हैं. These 4 guests are pioneers in their own field, be it the PHLIV community, the LGBTQI community, the transgender community, or the PWID community. We have with us Anandi Yuvraj. Anandi Yuvraj is an AIDS activist and HIV and SRHR consultant based in India. Currently, she serves as the Vice Chair of the India Country Coordinating Mechanism, or ICCM, that coordinates the Global Fund grants development with an oversight role. Anandi worked as a consultant with UNAIDS India at the regional level and many high-level committees at the global level. Anandi spearheaded the Asia-Pacific Regional Chapter of ICW as Regional Coordinator, where she led community-based research. Welcome to the show, ma'am. We also have with us Palash Bora, a very young and powerful voice from the state of Assam. He has been a very, very potent voice for the LGBTQI community. He has also been the curator or the brains behind, if you can guess what? Yes, he is the curator behind the Miss Trans Northeast India Beauty Pageant and Conclave. We are very happy to have you with us, Palash. Another guest, yes, Reshma Prasad joins us in the first episode of our podcast series. She has been a pioneer of transgender community and their rights, and especially the access to healthcare. Reshma is a pioneering transgender social activist from the state of Bihar, widely recognized for her groundbreaking contributions to advancing transgender rights and inclusivity. As the founder and project director of Dostana Safar, which is Bihar's first transgender-led community organization, Reshma has been instrumental in driving social change. We are very happy to have you here, Reshma ji. Thank you for joining us. Also joins us today is Sudhirtha Datta. He's a drug user activist advocating for health and rights of people who use drugs and or are affected by HIV, AIDS and allied illnesses. Currently, he works as a senior program manager at YRG CARE, and he also manages the Care and Support Center 2.0 initiative, which is a strategic management of the National AIDS Control Program's efforts to combat HIV/AIDS in India. Thank you, Sudhirtha, for joining us. In our discussion today, whether it's Anandi ji or Palash or Reshma ji or Sudhirtha, आप सब के लिए मेरा सबसे पहला सवाल है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है सबसे ज़्यादा इस जंग को लड़ने का, उसमें आप सबका सफ़र अब तक का कैसा रहा है, कैसा चल रहा है और आगे क्या आपका विजन है? लेट्स स्टार्ट विद आनंदी जी. Thank you, Saira ji. HIV program in India has come a long way. Over the 30 years and 3 decades, we have been implementing HIV/AIDS program in India. We have come across, as I said, long way, but it means the program has evolved, in many ways, and it has been diversified and taking lot of lessons learned through every 5 years plan that the National AIDS Control Program has been implementing since 1999, when the first phase of the HIV program started. Though the virus was discovered in 1985, and it took for the Ministry of Health to establish systems and institutions in place, such as the National AIDS Control Organization, started with the every 5 year planning, and it started with 5 year 1991, the phase 1,
And then, every 5 years, we call the National AIDS Control Program Phase 1 and Phase 2, Phase 3. And now we are into Phase 5, 2021 to 26 is the Phase 5 program. And for the last 30 years or over 20 years, we have responded to the HIV situation remarkably. And a lot of lessons have learned throughout this process, and we have evolved. When I say evolved, in terms of the scaling up the program as well as the quality of the program has also evolved, and the players, the partnership has also evolved. And if you talk about your journey until now, you say that, I'm sure that, there's a lot of progress that has been made. The adult prevalence rate has also come down, but still a lot of hurdles remain. So what is a day like in the life of Anandi Yuvraj? Yeah, no, as you rightly pointed out, well, we cannot, sit back and, because we have achieved and we have brought the infections, like to 50% cut from where we were in 10 or 20 in 2000. Now we have reduced the infection, but still, I think we have a target to achieve to reduce the new infection by 80%. We are planning to eradicate 30. So these are the big agendas we have. But every day we see the new infections are occurring among the most marginalized communities, and such as the LGBTQI and MSMs and their sex workers, people who use drugs, and transgender communities, and women and children, and so the young population, young people, key population especially. So we see the new cases are whenever I go to the ART center to collect my medication, HIV medication, I ask the counselors and I ask the, people who are like the peer counselors or other counselors, ART counselor, do you see new infections? Where do you see the new infections? And they say, the response saying, yes, ma'am, we do see the new infections among the young people, among the marginalized communities and MSMs and transgender communities, we see new infections. And even now, young women are coming and, and they are testing positive, and they are coming at the, antenatal care and during pregnancy time. And we still see cases even in, among young women and the reproductive age groups. Right. Sorry to interject right now, Nandiji. Just for my knowledge, what are the, the prevalence rate is more in men or women or No, the prevalence as of now, it says 0.22 million, and which is but when you see the people, adult men who are living with HIV are 0.28, and it's nearly 40 to 45% of the adult population are women. And if the new infections also closely 30 to 40% are occurring among women. Right. And so we can say that women are probably a minority within a marginalized community. Yeah. Mm-hmm. So this is what does it indicates, we really need to have come out with some new strategy to address the prevention gaps among young women, right. And especially the young key affected women population, marginalized women. Right. We call them women in all diversity, young sex workers and spouses of MSMs. They're 60-70% of MSMs are married in India, right, and there are many research points out that, and what happens to the spouses and partners, especially the female partners of those populations, right, have not been covered. We do not have any strategy to cover them, right. Though we have them in the programmatic indicators and monitoring, but we do not, in reality, we do not have any data against what percentage of that population exists and what percentage of them are being covered.
Right. So this is a gap not only in India, I see that across the Asia world. Pacific region. Right. Now you have given me a very interesting cue for Palash because he's been a very strong voice of the MSM community. Palash, my question to you is that over these years, I mean, you have been very vocal about the rights, the right to access to healthcare, about especially the MSM community, because mostly, as Anandiji pointed out, that women become, through MSM community, they become carriers as well. Right. So mostly people kind of, do they tend to blame the MSM community? Do you feel that? I think this is a whole lot of issue, which of course Anandiji, when she mentioned, is right. While working on the ground reality, I've seen the biggest problem is that there are gay men who, of course, with family pressure, with societal pressure, would get married. And they're married to a woman now. And then, but the sexual urges are again towards, the same gender. Towards the same gender, yeah. And they are closeted, they do not want to talk about their own, self, their own identity. But then they will use different dating apps. I blame the dating apps definitely. And they will go around sleeping with different men, right? A lot of polygamy relationships happening here and there. And in result, I mean, if we look back at our past also, it is explained in the Vedas, in the books that, it is always healthy to be around just one person. When you're around with so many men, you're taking in so many energies, so many things, back from you because you're exchanging auras. And then you're going and giving it back to your, spouse, Right. which is so wrong. I am glad that I've got this opportunity to talk about it today, and Anandiji has put up this topic because this was never raised. And MSM men out there who are watching, because when I can take a stand for myself, I'm educated, I am from a good family, I am from a good background. I mean, why is the whole point to shy about your own orientation? When you can get naked with several men in the bed, you can sleep, you can have sex, you can be so open about it, but then even talking about yourself is a shy point. Right. I mean, come on, there are points when there are men who want to come and sleep with me. They'll sleep, okay, I'm not even denying the fact. But the next day they will meet you, on the very moment they will meet you, they will behave, they don't even know you. This is so sad. Right. And you believe that a lot of social stigma. The community itself is creating that. Why to blame the heteronormous community when the community itself is creating that blunder within themselves? And the most difficult part is that MSM men not able to accept transgenders now. I don't know why is this. They have this strange taboo that, for me itself what I face, because I'm working now as a trans rights activist, differing from the MSM category, I would definitely profoundly say, because I am more working towards the trans women and trans men, because what I feel, at least that community took a stand for themselves. They were strong. Socially, when they were transitioning, it itself is a big thing, because you have to come out to the society from the gender that you are born, then you are, transiting into a different gender. Right. That itself is a hurdle. And then for gay men, again, it is easy for them because they are not there's no transition. You're yourself. But then that is again a point, it is your responsibility. If you're sleeping around, please wear protection. Please go get tested. And even men, there are certain gay men who even are living with HIV. Right. They're even shy to even go to the ART centers to collect their drugs. Right. I'll tell you a recent incident that has been happening in my city, because I reside in Guwahati now. The ART center, I don't know for what, has strictly made a point that it is only the green book holders would go and collect their medicines. Okay. But Green book holders, I mean the ones who are positive, but no one else can go and collect their ARTs now. Okay. So now most of the gay men, they do not want to go and collect their medicine. Now what is it? The viral load is increasing. Sleeping around with several men there. You are spreading a plethora of cases here and there. Right. And that is where you come, gay men and MSM, the HIV positive cases, even in the young men, are increasing. Right. In fact, you actually made me recall a report that I read of the UN several years back. I think I was in college or school, which actually talked about this, because these days it's it's also become sometimes people label you as orthodox or conservative, and they say, let me explore my sexuality with different people.
But you said that, having more than one partner, it's not just, I won't use the word right or wrong, but maybe, not good for both the partners and for the community. And in that report, it was written that in Africa, the highest cases of HIV came from Africa at that point of time, from that continent. But when they practiced, of course, protection was there. But one of the key things that played a vital role was abstinence. 377 or sticking to one partner. Exactly. Just because 377 was kind of deformed, that does not give the right that you become XYZ. Right. So that is where I have to put my point. Right. Thank you so much, Palash. And पलाश के मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। और रेशमा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे पलाश ने कहा कि जो कि शायद बाकी सारी कम्युनिटीज़ में अभी भी उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ना सुनी गई है, ना शायद उतनी तेज़ उभर पाई है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण रहा है? ट्रांसजेंडर की बात करें और भारत में बात करें तो जो बातें होनी चाहिए थी वो बातें नहीं हुई, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कन्वर्जेंस हुए और कन्वर्जेंस ऑफ द आइडेंटिटी, और वो पॉलिटिक्स से जुड़ा, वो सत्ता से जुड़ा, वो जीवन से जुड़ा, तो वो जब धर्म से जुड़ा तो वो पूरी तरीके से बदल दिया कि सेक्सुअलिटी को जीवन के स्तर में अपराध के तौर पे देखा गया, धार्मिक स्तर पे, जो भारत में आने के बाद वो एक और टैबू ले आया। 1000 सालों का इतिहास रहा है जिसमें जो बाहर से शक्तियाँ आईं, उन्होंने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इस तरीके से उपयोग किया, जिसके बाद जो बोध है कि आइडेंटिटी एक अपराध हो गया। और जबकि ये भारतीय सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में उनको देवता और अलग तरीके से हिंदू माइथोलॉजी में देखा गया है और है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम HIV की बात करते हैं तो हम सेक्स की, सेक्सुअलिटी की, जेंडर आइडेंटिटी की, जेंडर डाइवर्स की, सेक्सुअलिटी डाइवर्स की, फेमिनिटी की, मैस्कुलिनिटी की, आइडेंटिटी के मतलब फ्रेम्स जो है उसको हमने कितना बात किया। अभी आपके साथी, हमारे साथी बात कर रहे थे गे मैन, तो कौन कहता है हेटेरो मैन? तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें क्यों कहना पड़े कि हमारा बिस्तर कहाँ है और उस बिस्तर पर हम कैसे सो रहे हैं, हम कैसे किसके साथ जा रहे हैं। तो ये सिर्फ पर्दा खड़ा किया गया सभ्यता के नाम पर, सभ्यताओं के विकास के नाम पे, जीवन के जीने के स्तर के लेवल पे देखा गया। तो सबसे बड़ी बात है कि अब HIV की बात जब 30 सालों में होने लगी, तब हम बात करने लगे सेक्स की, सेक्सुअलिटी की, जेंडर के डाइवर्स की। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि 1871 के पहले बात हुआ या 1871 के बाद बात हुआ, या जब यहाँ पे इस देश में राजा रहते थे और वो अपने यहाँ ऐसे लोगों को रखते थे जो जेंडर डाइवर्स रहते थे, सेक्सुअलिटी डाइवर्स रहती थी, उनकी कहानियाँ पूरी सारी जगहों पे ये रहती थी। लेकिन जब एक समय आया उसके बाद हमें लगा कि हम अपराधी हो गए और वो कानूनी अपराध हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब HIV आने के बाद तब जाकर के खुल करके आती है। तो ये कैसे ऐसा हुआ, इसको तोड़ना कैसे तोड़ना है? क्या हम ये बोल करके कि हमारे बिस्तर में हमारे साथ कौन है उसको बोल करके, या मेरे अंदर में एक औरत है उसे दुनिया को बता करके हमें समझना होगा। बताना है कि वातावरण निर्माण कैसे होगा, कि यौनिकता और लैंगिकता वो कैसे अलग है और वो कैसे जुड़े हुए हैं। और वो जैसे आप जब HIV की बात करते हैं तो महिला साथियों के लिए मल्टी पर्सन्स की बात करना लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई अपने आप को मेन आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और उनके साथ मल्टी पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो मर्द की बात कर रहे हैं कि मास्टर इन आर्ट्स ऑफ द रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज द आइडेंटिटी, वेयर इज द पर्सन, वो कौन लोग हैं? मतलब मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मेरी बात, कोई सेक्सुअल माइनॉरिटी, सेक्सुअल डाइवर्स पर्सन है तो वो अपनी बात, कोई सिसजेंडर वुमेन है तो वो अपनी बात,
लेकिन हम एक कलेक्टिव प्रोसेस में किस तरीके से, तो HIV ने एक कलेक्टिव प्रोसेस को ले आया क्योंकि वो यौनिकता के लेवल पे आया। राइट। वो उधर से जुड़ करके आ रहा है कि आप कंडोम नहीं लगा रहे हैं तो आप सब लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, ट्रांसजेंडर हो या कोई भी हो। वहाँ ना धर्म है, ना जाति है, ना कोई ये है। आप सेक्स कर रहे हो, आप अनसेफ सेक्स कर रहे हो तो आप उससे पीड़ित हो रहे हो। तो आपको कैसे दुनिया को बचाना है और क्यों इस 30 साल में मतलब आपने बताया आनंदजीत जी ने कि 1985 के बाद से ये हुआ। पूरे विश्व में जो जेंडर माइनॉरिटीज़ और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के आंदोलन को देखा जाए, इतिहास को देखा जाए, तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कि जूडिथ बटलर जब कहते हैं तो 1984 में आकर के कहते हैं जेंडर इज़ अ परफॉर्मेटिव। लेकिन हम तो आज नहीं, हजारों सालों से जानते हैं कि जेंडर इज़ अ परफॉर्मेटिव एंड देन अगर परफॉर्मेटिव है तो दैट्स माय आइडेंटिटी। और उसके लिए कोई हमें ये नहीं कहना पड़ता है कि हमारा भगवान भी उस तरीके से है, हमारी जिसको हम पूजा करने की अपनी पद्धतियों में ये करते हैं वो भी उस तरीके से हैं। तो वहाँ पे तो इस यौनिकता की बात और यो की बात करनी ही नहीं पड़ी जी। वो अपने जीवन के साथ में है। तो ये सबसे बड़ा जरूरी है कि HIV एक रास्ता है जो मौके देता है कि बहुत सारे लोगों के लिए खुले दरवाजे होते हैं, चाहे मल्टी पर्सन सेक्स करने वाले महिला या पुरुष साथी हों, जो सेक्सुअलिटी डाइवर्स हो या जेंडर डाइवर्स हो। तो इस रास्ते को अगर HIV को कैसे ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पे बात किया जाए, हमारे जैसे लोगों पे बात किया जाए। ये चीज़ कही समाज के बारे में कि अगर एक मर्द के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं तो उसको माचो का टैग लोग देते हैं, उसके दोस्त देते हैं। लेकिन अगर वही एक औरत अगर मल्टीपल पार्टनर्स रख रही है तो उसको जो है स्लट पुकारेंगे, उसको इस तरह के जिसके कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे। तो ये हमेशा से एक मेरे ख्याल से समाज की ही, इसमें इंसान क्योंकि इंसान रहा है हमेशा से, और वो हमेशा से औरत के लिए इतना ज़्यादा कह सकते हैं नॉट बिन वेरी काइंड टुवर्ड्स द वुमेन। 37-38 नाम होते हैं अगर आप मल्टीपर्सन सेक्स करते हैं तो आपको मतलब 37-38 नाम होते हैं और वो एब्यूज होता है, मतलब गाली होती है और उसको समाज ऐसे प्यार से मुंह में ले लेता है कि उसको बोल देगा RANN। मैं नहीं बोलूं, मेरा दिल कहता है। तो इस तरीके से अगर कोई कहता है कि मैं सेक्सुअलिटी डाइवर्स हूँ और जेंडर डाइवर्स हूँ, दोनों लोगों के एक ही शब्द बोलेंगे छक्का, दोनों को। तो हमारे में डिफरेंट क्या है और हमारी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को ये लेकर के, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेक्स पे बात करना, सेक्सुअलिटी पे बात करना, जेंडर आइडेंटिटी पे बात करना और इसके फ्रीडम की बात करना। आज़ादी किस तरीके से देखी जा सकती है हमारे आज़ाद होने से। अगर मैं इनको छू रही हूँ तो इनका आज़ादी ये हो रहा है, मैं नहीं छूँगी, मेरी आज़ादी जहाँ तक है मैं उधर तक चलूँगी और उसके आगे बढ़ूँगी। लेकिन इसको जब नहीं सोच पाते हो तो परेशानियाँ बढ़ती हैं। तब हम पुरुष खोजते हैं, महिला खोजते हैं, ट्रांसजेंडर खोजते हैं, फिर अलग अलग तरीके से खोजते हैं। हमें खोजना है कि हमारे बीच में जैसे कोरोना इज़ अ पैंडेमिक आया और लोग अपने आप को बचाए, जीवन को ये किया गया, HIV उसी तरीके से ख़त्म हो और जीवन में आज़ादी आए। रेशमा जी, आपने एक बहुत ही अहम ये मुद्दा उठाया कि हमारी जो संस्कृति थी, मूल संस्कृति, जो प्राचीन संस्कृति थी, उसमें अगर चाहे हम लोग पुराने मंदिरों की कार्विंग्स देखें तो लगता है कि हाँ, या पेंटिंग्स देखें तो लगता है कि हाँ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक और कोई स्टिग्मेटाइज्ड नहीं थी। लेकिन क्या कभी भी पोजीशन ऑफ पावर में इतिहास में आपके पास कोई ऐसे इंस्टेंसेस हैं? क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे राजा, आप कहते हैं हर राजा जो है अपने एक ज़नाना खाना भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि कभी कोई पोजीशन ऑफ पावर दी गई हो? नहीं, पोजीशन ऑफ पावर था। आप मतलब राजा एक एम्परर भी रहे हैं। मतलब महाभारत को देखिए कि उनका राजा जो है वो एक ट्रांसमैन पर्सन है, मतलब कि वो शरीर से अपना सिसजेंडर वुमेन का बॉडी है जो उनको असाइन टू द बर्थ मिला हुआ है और वो अपने आप को पुरुष होकर के सामने आते हैं। और एक वहाँ पे एक और योद्धा जो कहते हैं कि नहीं भाई, उनका हम बॉडी जानते हैं इसलिए हम उनसे नहीं होंगे, और इससे उनका ख़त्म हो गया ज़िंदगी।
तो सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, हमारी बहुत मजबूत स्थितियाँ थी, वो आज के जो 1000 सालों की ये स्थिति भारत में हुई है, सारी चीज़ों पे जो भी प्रतिबंधों का दर्शन देखते हैं, वो जीवन के दर्शन में ये सारी चीज़ें आई, कैसे हमारा संस्कृति बदली, हमारा जीवन बदला, हमारे बीच में किस तरीके की स्थितियाँ आई कि मतलब आप जो कह रही हैं कि सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात, आप देखिए सेक्सुअलिटी डाइवर्स की बातों को एरोटिसिज्म आर्ट के तौर पे देखा गया। आज एरोटिसिज्म की बात हो रही है और उसके आर्ट की बात हो रही है, क्वेयर आर्ट की बात हो रही है, डिफरेंट जेंडर नॉन कन्फर्मिंग बात हो गई। वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पड़ी हुई है और हमने कभी उसको कैसे स्वीकारा, क्योंकि हमने स्वीकारा लेकिन लोगों ने उससे ठुकराया कि इनकी सभ्यता बहुत विकसित थी जो उनके लिए आंखों का दर्द था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम HIV जो रास्ता है कि अब हम लड़ रहे हैं कि HIV खत्म हो। 2030 की बात में घोषणा हुआ, मैं उधर में गई थी जर्मनी, तो उधर में घोषणा हुआ कि ये हो, तो अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो दवाई हमको सस्ती में मिल जाए, तो कैसे मिलेगी? राइट। और वो मेरा अगला सवाल होगा आप सबसे, जब हम लोग हेल्थ केयर की बात करेंगे तो हम चाहते हैं कि उसके लिए आप अपनी बचा के रखें। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी पलाश ने भी बोला कि सबसे ज़्यादा सराहनीय अगर किसी कम्युनिटी ने काम किया है तो वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। क्या आप सोच मतलब आई एम जस्ट आस्किंग योर व्यू, क्या कि इसकी ये एक वजह हो सकती है कि सबसे ज़्यादा विजिबल अगर कोई दिखता है, for example a lot of men they don't admit whether they are gay or not and nobody will be able to make out, but एक ट्रांसजेंडर को दूर से देख के समाज में पता चल जाता है और इसलिए डिस्क्रिमिनेशन भी सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स का सोशल फैब्रिक में हम लोग देखते हैं होता है। तो क्या एक ये वजह रही? वजह ये रहा है कि हमने परिवारों में उनको देखा ही नहीं। हम इस बात को नहीं देख करते, हम एज्यूम करते थे। पहले मैं खुद एज्यूम करती थी, मैं खुद जब अपने आप को नहीं जानती थी तो हमारे ट्रांसजेंडर साथी जो ट्रेडिशनल काम करते हैं उनको मैं देख करके कहती थी कि बाबा हमको उठा ले जाएगा, ऐसा करेगा, हमको डर लगता है, उधर करेगा, ऐसा करेगा। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, वो एक मिथ फैलाया गया और ये मिथ हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ा हथियार के तौर पे हुआ कि हम उस मिथ को तोड़ते जाएंगे और अपने जीवन को एक दिशा देते जाएंगे। ये मिथ कहाँ कहाँ है कि एक माँ पैदा करती है एक बच्चा जो उसका शरीर असाइन टू द बर्थ मेल और फीमेल बॉडी, और उसके बाद उसकी विपरीत जाकर के हम स्वीकार करते हैं या इंटरसेक्स बॉडी पैदा हो रही है या तो अगर ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं और अपने आप को उसके विपरीत जाकर के या जैसे आप पैदा हुए एक वेजाइना और ब्रेस्ट के साथ में और उसके बाद आपने स्वीकार किया कि ये वेजाइना ब्रेस्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और मैं एक औरत हूँ। मैं बोली कि नहीं, ये जेनेटेलिया हमने जो पाया उसका हम विरोध करते हैं कि नहीं, हम किंतु नर है, मतलब किन्नर जो शब्द है और ये पाणिनि के व्याकरण में लिखा हुआ है। तो जब हमने उन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं किया, ये द्वंद्व चला और जीवन का द्वंद्व को जो भी स्वीकार कर लेता है वही विजेता होता है। और आज जो लोग देख रहे हैं कि नहीं ट्रांसजेंडर वॉइस बहुत वोकल है, बहुत एक्सेप्टिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने आप को सोचा कि नहीं, मुझे लड़ना है, जो लड़ेंगे जो जीतेंगे और जो नहीं लड़ेंगे तो वो तो उनको सोचना होगा। जैसे HIV के वायरस के प्रति कैसे हम लड़ रहे हैं कि इस पे हमको जीत हासिल करनी है, होगा, पक्का होगा। हम यहाँ तक आएगी कि अभी सेफ्टी के लेवल पर कंट्रोल में आए हैं या थोड़ी कमियाँ ये है, तो उन सब चीज़ों को भी सही करके हम ट्रांसजेंडर ही नहीं, हर किसी व्यक्ति के लिए कि हम 72 तरीके से जेंडर को, मतलब लैंगिकता को परिभाषित करते हैं और यौनिकता को 55 तरीके से। तो क्यों हम बात करते हैं सिर्फ हेटेरो और होमो की? राइट। हम क्यों नहीं बात करते हैं एसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, डेमीसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मैंने एसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, हर किसी की बात क्यों नहीं करते हैं? उसी तरीके से सिर्फ महिला और पुरुष और ट्रांसजेंडर की क्यों बात कर रहे हैं? जेंडर नॉन कन्फर्मिंग, ओमनी जेंडर, बाई जेंडर, कोई भी ये हो, तो बात करने के दायरे को कैसे बढ़ाएंगे और जीवन को मतलब एक अच्छी दिशा के लिए, जैसे हम संघर्ष कर रही हैं कि नहीं मैं
अपने मन से मैं औरत हूँ, आप मानो या ना मानो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल। नहीं मानते हो तो तुम अपना बिजनेस करोगे, मैं तो अपना जीवन जी रही हूँ। बिल्कुल, जी और जीने दो। हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि रेशमा जी ने कहा कि जो जीवन के द्वंद्व को स्वीकार कर लेता है वही असली विजेता होता है। एंड हमारे आज पैनल पे जितने लोग हैं मेरे ख्याल से वो सबको कहने की ज़रूरत नहीं है, बट सब अपने आप में बहुत विजेता रहे हैं और बहुत सारी जंगें अभी भी लड़ रहे हैं और बाकी हैं। But Sutirtha, I want to come back to you. You have been very a strong voice for the PWID community, but how has been your journey? Because I was very intrigued. क्योंकि mostly people tend to probably don't, you know, they tend to look down upon the PWID community rather than going out to help them. So, what has your experience been? To start off, I actually I'm a drug user. I come from the drug user background. I started drug using at a very young age, and only then I came to know that this is a problem and there's help out there in the open, and then the government is doing some work on that. I actually went for a treatment, which what we used to call treatment at that point of time. There used to be only one kind of treatment, that's counseling and detoxification of people, and then leave them out in the open among the old friends, old peers, and the drug using peddlers and everything. You can say a point for relapsing into that. Absolutely. Oh, okay. So we see that maybe only 2 to 3% of such people come out through this kind of treatment. Actually, I would like to thank HIV and the national program which the Ministry of Health runs, for which the drug users actually got another way of treatment, another way of help which we can seek today. Back in 2001, we had a national AIDS control policy which included this form of treatment, which is called harm reduction. And now it's widespread, and it's been scaled up throughout the country in the villages, in the districts. We see a massive expansion of the program, and now people can make choices. Because you see, if you the moment you see a drug user, if you start thinking that this person is an addict and this person requires confinement treatment and for a long period of time, and then that person's has to, I mean, for taking the treatment you have to be away from the family, you have to be away from your job, from studies and everything. You have to leave out, you are totally cut off. Right. That doesn't work well with everyone, because everyone doesn't come from the same socioeconomic background. So, and on the other hand, if you see, there are also drug users who are non-daily users. There are a subset of users who are children who are using drugs. Right. Then we have female who are using drugs, and we also see a lot of drug use among the LGBTQI community, which we call chemsex or sexualized substance abuse. So those kind of issues are there, which we leave out if we talk about only one kind of treatment. Right. So actually, this program has done come a long way, but then that's not the end, because we know that every day there's a new drug user taking birth. And Sutirtha, talking about your own personal journey, you said that how important was the role of the family? Did it play a role in your journey in probably making you come out of that vicious cycle? Definitely, my family was a great help for me, but then the ways that I was mentioning earlier, the only form of treatment was if you pick up a person who is not willing to quit drugs. But then I personally feel that everybody should have their own opinion. Right. Drugs was there in the society since the very beginning of times. It's not that we have started this drug use only 50 years ago, when the awareness and then all these things started. So the only form of treatment was that. My family first tried to put me into the jail, lock up for some time, so that I'm scared and I quit drugs. Right. Then they threw me out when they saw that they cannot control me by those means. Then they started understanding the problem of rehabilitation. Of rehabilitation and detoxification. They started Right. putting me in rehabs. That way I came to understand that this is how we can quit, and this is the way of life. All those nitty-gritties I came to know. So family really had a very big role to play, but then I would say the way of looking is also not good. There are stages of people using drugs, and there are every stage we can help them in certain ways. I think families are part of social, part of the social fabric and society की बहुत ही basic unit होती है एक family. So I think, do you feel that there is lack of awareness in our society in general? That's why families and family members, they act like that.
Problem is not that actually. Drug use is not just seen as I respect the issues of LGBTI community. That's society sees it as a moral and character issue like that. With that, along with that, we have this issue of legality. So the way society looks at ours is that today, if somebody, I see some group of people using drugs or alcohol in front of my house, what I'll say, I'll tell my wife that इनको भगाना पड़ेगा, मेरा बेटा सीख लेगा. That's how people sees that. But that's not how people are introduced to drugs. Introduction to drugs has a lot of factors. You have to have some chronology of factors which will actually push you into drug use. And there are so many people out in the open. They have used drugs once or twice in their lifetime, but then they haven't continued. So it's not like that you look at people and you put them into detox or shy them away. That's not how this thing works. It's actually, I think, awareness should be given not to just the families. It should start as an education from class 9 or 10 in the higher standard. It should start as an education. The education should be in the administration. The police also should be trained on how to deal with this kind of people. It's not that every time you require a harsh treatment for any kind of drug use. Absolutely. In your professional experience, Sutirtha, what is your take that who are the most vulnerable of all the people who are probably caught up in this vicious cycle? All the drug users are vulnerable, and everybody is equally important for me. And the program, we know that every single injection or every single next puff can be deadly for anybody. And also, I would refer to this the data also that we come across. Although we have seen that the national program worked so well, but our programs has been designed for prevention. Our programs are designed for treatment and care and support. That way it has been designed. But then if you see a person coming to a prevention, the first awareness message a person is getting, usually I have seen, there's no theory like that. Anybody can start drug use at any point of time in their life, but usually people start drug using, who continue drug use is around 14 to 16 years of age, or maybe 18 years of age, 19 years of age at that point of time. At least 5 years it takes a prevention program or awareness program to reach them, to say that there's help. Yeah. So that is where we are lacking. So the children, I would say, is the most vulnerable population. The adolescents who are just entering into the youth phase, they are the ones who are the most vulnerable. Then especially women also. If you see the global data of 2022 also, you will see that 1 in every 4 HIV infected person is a young person between the age group of 15 to 24, which is really, really alarming. And a lot has been considered by the drug users itself. Right. Yeah. Okay, now coming back to Anandi ji, now I'd like to hear all personal stories from your life. So, what was that one particular moment in your life that when you said that, okay, now this is the purpose of my life, I'm going to be the voice of so many people. What was it? Was there a particular moment? Yeah, there was a moment that triggered me to dive into this, public health program of HIV. From my personal experience, I just started, disclosing my HIV status and, in my own, districts. And it happened that I was going to meet one of the administrative officer in my district. And then I did not introduce myself as a person living with HIV, or, I just introduced myself. He thought that I'm a social worker, and so I'm doing some good work for community of people living with HIV. So, and then so he was like really treating me like as like an equal, And then during the conversation, I said, I'm a woman living with HIV. I've been infected, and so then I could see the change the way he was like really looking at me. And the next day, I finished my conversation, and I could sense that he wasn't really receiving what I was saying it. And the next day I came back, and he was giving me in really nice cups and tea cups,
the next day he, he did not treat me the way he was treating me at the beginning. And he was like, I could see that, and there was a lot of stigma that, I could see that the minute you disclose your HIV status, people do change and, based on whatever their understanding. But then, I felt, though in my family, I did not have any problem and they accepted me like anybody, they never given me any special treatment or anything, and they just, when I disclosed my status to my mom, and she said, I said, I do not know, that was in 1997. Told my mom that, this doctors have revealed this is the status of my health, and they said, I will have only few years because it was 97, we did not have any access to medication, all of that. My mom said, do you think we all going to live forever? And so I was like, oh my God, what is this response? I really took that, very positively, even though my mom did not have zero knowledge about HIV, but still that moment of that philosophical and kind of thing, except that hit me, and I was looking for, I'm a well-educated and I have a master's and MPhil in zoology, all of that. I was looking for a lectureship position. But then I decided that maybe there is something that I need to offer, and because in my family, in my own community, whether my neighbors or my community, my village, I never experienced any. I was highly respected for what I bring. It just, they did not equal me to someone who is living with HIV. They see my potential, my contribution to the family and the community and the village and my interaction with the community. They valued for what I have been. As a person and not as a person living with HIV. They never looked at that side of mine, and so that actually gave me a lot of confidence that, I must do something, volunteer. I must really commit to do something around stigma. So my whole purpose, shifted from becoming a professional in an academic institution to diverting into public health, and that's where I changed, and I completely committed to work in the field of HIV. During my kind of work, and many people have challenged me with many questions like, oh, now that you are a person living with HIV, you are single, would you marry only a person living? Why should I marry a person living with HIV? I would marry someone who loves me, and I equally it's not based on the status, and I would do that so I've been constantly confronting and challenging the attitudes of people at various levels. That is, I'm actually consciously doing it, and I do it because it has a far-reaching impact, that when I say something. So I really use my position and my platforms very effectively till date. Even when this session is going on, that's what exactly I want to do, and I want every person living with HIV and communities who feel that they belong to marginalized community need to continuously challenge that position, challenge the community attitudes. That is, you can bring in change through social media. How do you spread awareness among the people who might just ask questions like, oh, but in a married life, won't you be able to won't you be spreading infection or something like that? How do you deal with those kind of things about education? It's about the awareness. It's just a lot of scientific information that you need to communicate, which is very important. And I think as people, whoever is taken up this position or frontline workers, they need to really have a competent skills in terms of understanding the HIV transmission, and that it just not is there's only 4 ways. There are many dynamics within that communication, and you need to really understand, and it's very sensitive issues when in a relationship also to talk about. Palash has brought out this very issue of disclosing the status. That's not easy, as we say, it is not, it's easier to say than doing it or implementing it and conversing with your close, like a partner or a spouse. It's not at all easy opening about, because our community is so closed and we don't talk about sexuality and sexual, orientation
conversation. So where will you, at what stage you will bring in that conversation? Where do you have that space? And because you need to really fight against the whole fabric of the orientation and conditioning of decades and of so many decades of that conditioning. How will you, that whether one person can break that into a bedroom scenario? No, that's not going to happen. That. And as you said that it's not easy to come out, but once, even if you come out, it's a very, very difficult battle after coming out to face and the then society. face the post impact. Yes. It's easy, but then you would have to continuously, consistently keep up that position, consistently fight at a 360 degree, or the 2 or 365 days. 24/7, you need to be prepared. That's why we see many people are not open their HIV status, though there are many people I have known many many of my colleagues and friends who are not open in the public. They don't talk about, even their close families, they don't talk about. But they do serve in big roles, in big networks and big positions. But they do not, true to themselves, they don't challenge, and so I see that, but we need to respect whatever it is, their decision. It's a personal choice. It's a personal choice. Absolutely. We need to respect that, and if I'm open, it does not mean that everyone want to be. Plus, not everyone can be as strong as you are, because it's a very personal anecdote related to my own life, I would say. And sometimes, for example, my own uncle, my mother's brother, he was gay, and I'm talking about a time when people never used to come out, and then he fought, he kept on fighting society. He was struggling with himself, and he was a very known journalist of his time, and but he just, for many years we thought that probably we found his dead body in Goa on a beach, and we thought that probably he was a journalist and very fierce fighter, so we thought that he's been murdered. But a few years ago, we were shifting houses, and I came across a letter, scribbled in his own handwriting. And it was a very hard-hitting letter. It started with the note that this is not a suicide. It is a murder at the hands of the society that I have been fighting incessantly, day in and day out. So that kind of really jolted me to the core, that this is not everybody can be as strong as you are. Some people, he was in the prime of his youth, he was in his early 30s, and then he gave up his life, but he refused to call it a suicide. He said that it's a murder at the hands of the society. I just cannot take it anymore, because, and it's a philosophical take on the of all the marginalized communities, who say, what are normal people? What is the definition of normal? Plus who is who to decide what is normal? Nothing is normal in the society. Nobody is normal. I don't know what we is the all have our own so-called normal. abnormalities. I don't believe, and I don't have a thing of Absolutely. notion of normal and what is normality and all of that. Yes. Palash, now I'd like to ask you, what if I asked Anandi ji about her that first trigger in her life, what was that trigger in your life that you said that, no, I have to now speak up, not just for myself, but for everyone from my community? See, like how Anandi ji also used the word fabricated. The world seems fabricated. Nobody actually speaks the reality. Even if I talk about the LGBTQ community also, everybody will say, oh, everything is in peace and harmony. We all need our rights. We all need our this and that. But what is the actual thing? Where is the respect for each other? Right? We all talk about mental health well-being, a lot of funds coming in and XYZ. But actually are things happening? So that is the whole point. See, I come from a very small town. I even told it very initially. There had to be someone like me who's suffering there, right? And just because I am from a place where, things are non-existent and I'll not speak about it, that was never the quotation. My first visit was to NAS Foundation in Delhi back in 2009, when I didn't even know what LGBTQ was, but I knew there was a support group meeting that was happening. One of my friend that I met through Planet Romeo back then, I was also using that time, and then that person suggested that you should go there and meet the people. I didn't even know, because it was a whole new gimmick world to me, and I was understanding, because men, even loving man, was something I didn't even know, coming from a very specific place. And then when I went and reached there, then I could see, I could hear
Anjali Gopalanji addressing the entire situation there, and then I could realize that okay, this is where things are, because I was always a person who was very good with debates back in school days, and I used to go for nationals, state level, district level. Right. So So I was you like, probably thought that, okay, I already have a skill. Yeah, so why I'm not I right. use this for my own voice? Right. I have been subjected to discrimination as a child. I have faced a lot of stigma, and I've been into taboo from a lot of my own people itself. So then I thought, like, when God has given an opportunity to be a voice for many, I should do it. And then when my movement started, and then I started doing a lot of, I was just merely 20 years old back then, and I started doing things. And I'm talking about 2009, 10, when things were not even discussed. Right. They were so different. I still remember the first time when it was a apolitical statement which I put up in 2013 Pride March. That poster was all over the newspaper the next day in the Delhi Pride, and I got threatening also, but nevertheless, it is again entering a new dynamics and then entering a new plethora. Then nationally, when I did a reality show in Godrej through NDTV, then I realized, yes, this is where I need to put up the voice. Right. Because the co-contestants were again, putting up, they were openly discriminating me, and it was again aired in the TV, but I was fighting it back. Right. So now, where you need to implement policies, you need to understand. See, I mean, The fight is at every level, right? So wherever you are fighting, but one needs to understand wherever it is. Right. How has government been incorporated? Is government supporting you? Wherever Right. you are, what are your rights? Without knowing your rights, you just cannot jump into your thing. And if the rights are not there, Right. go talk about it, find out ways. Right. And that is what I believe solely now. Yeah. And again, going back to the first question which was raised about the MSM community itself, even the MSM community itself has to go through a lot of barriers, I understand, but it is high time they unite, they talk about their challenges, why they have to get married and, like hide themselves, spoil a woman's life, Right. then get divorced also after realizing. But do not go into the cycle. Learn. Right. Break the taboo. You're born with it. It does not mean that it is shame to yourself. Absolutely. You're liking it. That means it is your own pride. Absolutely. So, जैसे कि रेशमा जी ने कहा, Yes, जो yes. स्वीकार लेता है वही Yes, विजेता होता है। yes. रेशमा जी, वो पहला वाकया आपकी जिंदगी में कौन सा था? बस ये सोचना होता था कि मैं एक व्यक्ति हूँ जो थोड़ा अलग हूँ, और फिर मतलब पढ़ाई लिखाई और ये सारी दौरान में मेरी फैमिली में इतना ये नहीं अच्छी, हमारी मदर प्रोफेसर रही हैं और मेरे फादर एक अच्छे इंजीनियर रहे हैं, तो फैमिली में उस तरीके का नहीं था, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी थीं जो हरदम मतलब दिमाग में ये रखती थी कि ये कैसे, तो उनके भी चैलेंजेस थे जिन लोगों के लिए हम ट्रिगर करती हैं कि इट वाज ट्रिगर फॉर मी। तो हमने कितना सोसाइटी को दिया है, हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मतलब हम अपने लोगों की बात कर रही हैं जो अपने आप को मतलब पीड़ित समझते हैं। जो पीड़ित अगर समझ रहे हो तो पीड़ा के भाव को बाहर लाना पड़ेगा। आप प्राइवेसी के नाम पर कोई चीज़ को ताला बंद करके कहोगे कि लोग मुझे सम्मान दे दें और इसकी जानकारी रखें, ये कैसे संभव है? मतलब मैं एक व्यक्ति हूँ, I'm suffering from any problem, and I'm not saying to the doctor. Right. Then So how will is that possible? It will be cured. Right. So then it is a very necessary. Each and every person will be talk. Who am I? I'm a trans man. I'm a trans man. I'm a trans woman. I'm a woman. I'm a traditional person. I'm a working. I'm a transgender. I'm a woman. I'm a man. Who am I? Right. I will say. और उसके बाद मैं किस तरीके से ये करूं कि जब आप ये कहते हो कि वो उसका दायरा है कि वो तय करेंगे कि वो सामने आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप किसको इकट्ठा करने जाओगे? अगर किसी भी सामाजिक संघर्षों की बात करें, महिलाओं की बात करें, 200 साल लगे हैं जब हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। वो महिलाएं कौन थी जो निकल करके आई, आवाज़ों को बुलंद किया
और अपने आप को मजबूती से रखा। तो हम ये नहीं कह कि मैं एक गोल्डन बिस्किट हूँ जो हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, नहीं, हमने एक अप्रोच किया है कि आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, और सब बोलो, अपनी माँ के पास बोलो, अपने बाप के पास बोलो, अपने समाज के पास बोलो कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद है और आपको नहीं पसंद है तो मैं नहीं कुछ कर सकते, इट इज़ नॉट माई बिजनेस। और ये कोई ऐसा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम भी तय करें कि नहीं हमें बोलना भी है। हमें ये निर्धारित करना है कि मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा होगा, कि हम एक अच्छे जीवन की जो तलाश करते हैं लोगों को पता होगा। हम बोलेंगे ही नहीं और लोगों से कहेंगे कि ये बदल जाए, वो बदल जाए, ऐसा बदल जाए, तो बदलाव लाने के लिए बोलना कुछ जरूरी है एकदम। और आपको हर समय ट्रिगर के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगर वार्निंग कब आती है? जब लोगों को लगता है ये कुछ बुरा हो रहा है, ये कुछ बुरा बोल रहे हैं। अरे आप सामने आओगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे ही, बिल्कुल। तो उनके बुरा बोलने पर हम अपने आप को सामने आना रोक ले तो आप एक सामाजिक अपराधी हैं। आप एक सामाजिक अपराधी प्रवृत्तियों को जिंदा करते हो, खड़ा करते हो। कि जैसे रेशमा जी ने कहा कि अगर आप खुद नहीं बोल रहे हो तो आप भी अपराधी हो, क्योंकि वी टेंड टू इन द अवेयरनेस कैंपेन्स वी डोंट लुक इनवर्ड, वी ट्राई टू ऑलवेज लुक आउटवर्ड। So how important it is now? नहीं, मैं इसी बात को जोड़ते हुए कह देती हूँ, मैं कैसे अपने माँ बाप और अपने सामाजिक रूप से दायरे में जीने वाले लोगों को गलत कह दूँ जब उनको खुद नहीं पता। मैं खुद नहीं पता था कि मैं एक पर्सन हूँ, मैं अपने आप को कुछ अलग महसूस करते हैं कि नहीं भाई मुझे ऐसा शरीर में ऐसे नहीं रहना है। तो जब हमको याद करने में, पहचानने में 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल लग जा रहे हैं, तो हम कैसे अपने माँ को कह दे कि वो एकदम से ऐसा करके आएगी कि वो मुझे बहुत ये करेगी? नहीं, मेरा माँ बाप कोई भी गलत नहीं है और कोई समाज गलत नहीं है। सभी को बोलना पड़ेगा, सभी को सामने आना पड़ेगा। नहीं तो आप नहीं बोलते हो, नहीं ये करते हो, तो आप निश्चित तौर पे एक पर्दे के पीछे एक साम्राज्यवादी आपराधिक प्रवृत्ति को स्थापित करते हो। सोचते हो जब हो कि वो क्यों बोल रहा है ये बात, हमारी बातों को बाहर क्यों निकाल के आ रहा है? नहीं, बोल रहा है तो ही अच्छा है। जैसे आप आनंदी जी ने जब बोला और कोई व्यक्ति उसको सामने में जो था वो सोच पाया कि नहीं भाई ये मेरे लिए, क्योंकि उसको खुद ही नहीं ये था, उसके मन में था कि नहीं बाबा उसको छू देंगे तो मुझको हो जाएगा, उसको ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो नो, सुतीर्था जी जब बात कर रहे थे कि मतलब ड्रग को लेना वो एक सामाजिक अपराध प्रवृत्ति को ये किया गया, लेकिन कौन बात किया? तो बात करने की, अगर हम बात करने की बात करें तो बहुत ऐसी जगहों पर, मतलब मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात करें, कोई बोलने वाले वॉइस नहीं नजर आएंगे। तो बोलो 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 बोलो। So my next question to all of you, and starting with Sutirtha, is that access to healthcare, that still remains very crucial, you can say, especially for the PLHIV community. What is your take? What are the areas that actually, particularly in the healthcare sector, that need a lot of concern? To access to healthcare is the, I mean, this is just an interface which we take it, I mean, upfront. But if you really look into it, there are several other factors also. It's not just accessibility. We have to first talk about availability. How much access to healthcare? I mean, the healthcares are available. If you go into the villages, do we really have HIV medicines in the villages and the districts? Do we go house to house with medicines? No, we do not. How much a person has to travel to and how much time it takes for a person to actually access healthcare. Then comes the another factor called affordability. I mean, for the drug user community, I would say we are more infected with hepatitis C virus than HIV. HIV is also a big thing. We now follow a test and treat policy. Earlier, we used to wait for a person to come down to a low CD4 count, and then we used to start medicines. But then this test and treat policy says that you have to, the moment a person is diagnosed of HIV, you have to start the treatment. Right. Is it really practically happening? No, it is not. I have been talking to many such
people who are actually controlling this whole treatment policies and everything, and we saw that at least it takes 2 to 4 days for a person to come, and by that time a person loses interest. By that time a person, they have this fear of disclosure also. Many people doesn't want to go to the ART centers and the hospitals, so that the neighbors or somebody else doesn't know about their status. There are many people who doesn't want to take ART from their nearest ART center. They goes a long distance just because so that they're near people in the neighborhood, they don't recognize them. Exactly. So those kind of things also issues also we need to address, and then comes the acceptability also. The person's acceptability. I'm not talking from the service provider's point of view. I'm talking about the patient's point of view. Are we really accepting the services that is being provided? As I mentioned, all these treatment services, everything, care and support, everything is available, widespread, everywhere is there. But then there are set of populations which would require special attention, and for them we have to do something else. Right. Like India has taken many steps in the recent past. 2-3 years we have seen that we are giving multi-month medicines to people who are stabilized on treatment. We are doing that. We are giving take-home doses for people who inject drugs. There's a special kind of medicines which can actually stop your withdrawals, and where you can think about your going back to your family, going back to your society in the mainstream. Right. So those kind of medicines also needs to be provided without any kind of condition. Those conditions applied, people will naturally some people will always be there who will not like to come to the treatment and accept the treatment. That's true. And tell me, Sutirtha, are there any gaps that need to be addressed at the policy level? Policy level, yeah. I would not say gap. Yeah, India has been thinking a lot about it. I think we should introduce. There are studies. Not in India, we haven't done any pan-India study which says that PrEP is a medicine which a negative person can take and stay away from HIV. They can live life on their own terms. So those kind of things needs to be introduced for all sorts of population among whom we see the HIV epidemic is concentrated. Right now we know the general population, we have done a lot and it has come down to 0.28%. Right. But then what about the other population groups? There are female sex workers, there are transgender population, there's MSM population, there's PWID population. What about them? How to protect them so that they doesn't get HIV infected ever? Right. So those kind of steps need to be understood, and that needs to be taken. That's true. And let me get back to Anandi ji, because this is a very crucial, you can say, because everything, of course, we are addressing the society through awareness campaigns and everything, but with the government's role also, it's a very big role, especially in the healthcare sector. So the same question that I asked Sutirtha to you as well, that what do you think, especially for the PLHIV community, what are the key areas in the healthcare sector that really, that you feel they need to be addressed? Thanks, Sarah, for raising that question. To people living with HIV, we do have access to antiretroviral drugs that actually helps us to continue our life and prolong our life span, and we have an improved quality of life. In terms of accessing the HIV medication and managing our HIV related illness. But even now, I think many people living with HIV are complaining about the advanced HIV illnesses and Cryptococcus meningitis and other infections like TB and Hep C and the cervical cancer, for example, among women. And women are more vulnerable, and the prevalence of cervical cancer is very common it is in women living with HIV than the other communities who do not like women non-HIV women in the community. So we see this kind of a trend, and also we come we have data also within our ART programs that the non-communicable diseases are also raising, like diabetics and due to side effects of medication, overweight and managing obesity and other issues, and heart illness, and that many things are not being addressed. And we know that the health system
is equipped and well resourced when it comes to HIV and providing ART medication and some STI, but it's not really comprehensively looking at the entire health issues of people in the HIV and other MSMs and transgender community, for example, Right. providing gender affirmative care, and they don't have a comprehensive way of providing health care to these population. So that's where the health we need to see the shift in really providing and having a policy that provides these care, a comprehensive health care package to people with HIV and the LGBTQI and the entire marginalized communities, and including the one that he's our friend pointed out, the PrEP. Right. PrEP we do, I see that at the regional level many countries are rolling out PrEP, and with the support of Global Fund is funding for PrEP, and also another thing that now we are talking about options like condom, yes, prevent, but then we also need PrEP. And there are, when it comes to women, we also need women-controlled, tools such as the dapivirine ring, which is also widely being kind of promoted. And the Global Fund does fund, provide earmarked money for many countries when they submit proposals. Right. They can, ask for rolling out dapivirine ring among the marginalized communities, for example, women and women in all diversity. So there are many opportunities are there than how the health system and the communities and are going to approach that and tap those resources. Right. Now everyone talked about the comprehensive, the lack of comprehensive treatment for all the communities. Right. But what about the access? Now this question is for you and Reshma ji both. What about the access, even if that infrastructure comes in place, for example, but because the communities are so much discriminated against, and maybe what are the battles and struggles that you feel that in everyday life, the access to healthcare? So I'll tell you the most surprising thing that was happening in the ART centers in Assam. So whichever transgender person used to go to the ART center, they were registered as male MSM. So they didn't even consider them as what was transgender. No, okay. So when we were testing clients at our centers, at the one-stop centers, so for the confirmatory, when we used to get them there at the ICTC and then for the ART linkage, so whole referral was male then. So it was a huge battle, then applications were written and the Transgender Protection Act was again presented that without the ID cards also, at least when the client is coming and saying that they are a transgender person, a transgender woman, or be it a transgender male, this referred, the same ideology or the same identity as the same. Now what happens now, the person, again, the transgender community especially, they are vulnerable. रेशमा जी, जैसे पलाश ने मेंशन किया कि जो सबसे बड़ा बाधा कई बार हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर सेंटर्स में यही आती है कि एक लेबल, अम्ब्रेला लेबल सबके ऊपर थोप दिया जाता है, तो एक इंडिविजुअल यूनिक नीड्स नहीं एड्रेस की जाती, वेदर अ पर्सन इज ट्रांसजेंडर मेल और अ ट्रांसजेंडर वुमन. तो आपका अब तक क्या अनुभव रहा है इसमें? नहीं, हमारे अनुभव की बात नहीं है. हेल्थ बहुत बड़ा विषय है, मतलब बहुत ही बड़ा विषय है. राज्य की, देश की या ग्लोबली सरकारें बदल जाती हैं स्वास्थ्य की बात करके. अगर आप अच्छा स्वास्थ्य सर्विस देते हैं तो आपको लोग पसंद करते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो आपको पसंद नहीं करते हैं. तो ये चीज़ों को कैसे समझना और समझाना कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी भी है जो जिंदा रहना चाहती है, जिससे स्वास्थ्य की सुविधाओं की आवश्यकता है. उन स्वास्थ्य की सुविधाओं में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. मैं लेकिन एक बात से बहुत ये होती हूँ, क्योंकि ट्रांसजेंडर हेल्थ या जो जेंडर डाइवर्स हेल्थ है, उसको सेक्सुअलिटी डाइवर्स हेल्थ से जैसे ही बात करते हैं वो पूरी तरीके से मैस हो जाता है. फिर उसके बाद वो जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो दे आर नॉट सेंसिटाइज, दे हैव नॉट फाइंड द इंफॉर्मेशन कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, उसके बाद वो उसमें नॉमिनिकल्चर चेंज होते हैं, नेम आइडियाज चेंज होते हैं, पढ़ाने के आइडियाज पे बात करना शुरू होता है. ये क्यों ऐसा होता है? नॉट जस्ट डॉक्टर्स, आई थिंक एवरीवन इन द हेल्थ केयर सेक्टर, फ्रॉम द कंपाउंडर टू द नर्स, एवरीवन एक लड़ी है पूरी. मतलब स्वास्थ्य की बातें किस तरीके से की जाएंगी. जब आप महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं
तो महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं, SRHR की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन लोग शामिल है उसकी बात करते हैं। अगर आप मैस्कुलिन पर्सन्स के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उस तरीके से बात करते हैं। हमारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए आप कैसे बात करेंगे, उसका क्या तरीका होगा। व्हेन एक व्यक्ति है जिसका बॉडी, जैसे आपने हेमन आरिफ के बारे में देखा और अभी भी उसी तरीके से वो चल रहा है और उसको उसी तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वन ए पर्सन, इंटरसेक्स पर्सन, उसका शरीर बाहर से देखने में औरत का है, अंदर से उसके शरीर में क्या क्या है आई डोंट नो कि वो खुद जानते होंगे, क्योंकि वो तो भगवान किस तरीके से दिए वो उस तरीके की बात है, उसका क्रोमोजोम्स और ये सारी चीज़ें। अब उसको इस तरीके से लोग फैलाते रहे हैं कि हमें खुद शर्म आने लगती है कि अगर हमारे जो इंटरसेक्स पर्सन्स हैं उनके लिए आप किस तरीके का जीवन बनाना चाहते हो, क्या वो गलत है। मैंने तो देखा कि एक वीडियो में एकदम लिटरली अब्यूज तरीके से उसको बोला, जबकि वो पूरे कम्युनिटी को अब्यूज है। हेल्थ इज अ मेजर इशू और उसको किस तरीके से बात करना है वो हम बात करेंगे। Absolutely. हम बात करने का मतलब हमारे जैसे लोग जो दे आर रिक्वायर्ड कि वो उस तरीके की बात करनी है। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है कि हाँ ट्रांसजेंडर लोग हैं ना, उनको तो ये देना है, ऐसे ऐसे करना है, हाँ, तो we don't want that, of course. नो Yes, absolutely. मैं हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मेरे से बात करो। और आप बात करते हो किस पे, डाटा पे कब बात करते हो, जब आप जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। SRHR में आज बात होना शुरू हुआ है कि ट्रांसजेंडर हेल्थ को किस तरीके से लेना है और उसको किस तरीके से सोचना है। तो वो सोचने की जो ये है वातावरण निर्माण की जो पहले भी बात हुई, तो हर एक क्षेत्र में बात करना है। मतलब ये नहीं कि नहीं हम आए तो कहे कि हमको सर्जरी कराना है तो उसी से रिलेटेड बात की है। अरे आप प्री केयर, पोस्ट केयर, उसके बाद HIV से जो लोग पीड़ित हैं, सभी लोग HIV से पीड़ित नहीं हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर मतलब महिलाओं के स्वास्थ्य की बात होती है, क्या सिर्फ HIV की बात होती है? नहीं होती है, सारी बातें होती हैं कि उनको HIV के अलावा सारी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे उनके हार्मोनल चेंजेज हो या सब चीज़ हो। हमारी क्यों नहीं बातें होंगी? हमारी HIV से शुरू होती है और जेंडर अफर्मेशन केयर तक जाती है। आपने कहा हेल्थ केयर जैसे बहुत बड़ा विषय है, लेकिन एक छोटी सी बात जैसे हम बीच में कहना चाहेंगे, आपने इंटरसेक्स लोगों की जैसे बात छेड़ी और मेरी दोस्त जो इंटरसेक्स है उसने कहा कि सारा बेसिक थिंग हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स तो बहुत बड़ी एक जंग है। बेसिक थिंग एक टॉयलेट होता है, एक वॉशरूम होता है, उसमें भी हम लोग जो है, इफ़ आई गो टू अ वुमेन्स टॉयलेट देन आई पीपल आर गेट कॉन्शियस, नो दिस इज नॉट फॉर यू and I'm not comfortable going to a man's toilet. नहीं, मैन एंड वुमेन टॉयलेट की कोई अवधारणा होनी ही नहीं चाहिए। राइट। हम जब जेंडर असाइन ऑफ बर्थ की जो फीमेल जेनेटेलिया मतलब महिला यौनांग, पुरुष यौनांग और अलिंगी, द्विलिंगी, मध्यलिंगी व्यक्ति जो हैं, ऐसा लोग पैदा हो रहे हैं। वो आपका घर में पैदा हो रहे हैं, 2000 में एक व्यक्ति पैदा हो रहे हैं। तो जब ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं तो आप तुरंत उनको किन्नर कह करके डेस्टिट्यूट कर रहे हो। नो, दे आर द पर्सन, वो किन्नर नहीं है। किंतु नर की बात होती है कि जो नर शरीर का व्यक्ति जो नर यौन अंग के साथ में पैदा हो रहे हैं वो अपने आप को नर नहीं मान रहे हैं, वो अवस्थाएं हैं। तो इस चीज़ को कैसे समझ पाओगे कि जेंडर असाइन्ड एट बर्थ कि उनके हेल्थ के क्या मैटर्स होंगे। उसके बाद जेंडर जब आपका एक्सेप्टेंस के पार्ट में आता है कि वो हम सेल्फ परसीव क्या कर रही हूँ, आई एम सेल्फ परसीव एज अ वुमन, एंड देन यू आर सर्चिंग कि इनके बॉडी में वुमेन वाला पार्ट है कि नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल कि हमारे में वुमेन वाला पार्ट नहीं है? नहीं है और नहीं होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल कि अगर विज्ञान उसको बदल भी दे तो क्या आपका दिमाग बदल देगा? नहीं बदल देगा। तो मैं जो सोचती हूँ उसको सोचो, समझो और हमारे तरीके से जीवन जीने के लिए रास्ता दो। हमारी संख्या कितनी है कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हम है? हमें आप कोई मीडिया का कोना नहीं बनाओ कि हमें बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हो कि वन ट्रांस वुमेन कम, हमारे शादी में वो आई, ऐसा ऐसा करी। क्यों करी? क्यों ऐसा हो रहा है? मैं औरत हूँ, मैं मान रही हूँ, मेरी माँ माने, मेरा भाई माने, मेरा बहन माने, मेरा आमना सामना लोग माने, हमारा काम करने वाले जो है वो सेंसिटिविटी है जो कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा हर एक चीज के लिए, हर एक, एंड इट जस्ट डजंट प्रॉब्ली अप्लाई टू LGBTQI, ट्रांसजेंडर, PWID और PHLIV। आई थिंक इवन फॉर एग्जांपल पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आप बताइए, ये बिल्डिंग्स देखिए, मेट्रोज देखिए, कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, आप एक बार बस सोच के देखिए कि अगर मैं ये नहीं एंटर कर पाती,
इन सीढ़ियों से, तो क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? तो स्मॉल थिंग्स, यू नो, देयर आर सो मेनी स्ट्रगल्स दैट सेंसिटिविटी इज़ द मेन थिंग। और आपने जैसे कहा कि वॉशरूम क्या है, यू नो, ये तो एक आपने असाइन कर दिया बर्थ पे मैन एंड वुमेन, बट वो तो सबकी जरूरत है। एब्सोल्युटली, आप कभी मान लीजिए एज ए वुमन अगर किसी को प्रेगनेंसी के टाइम में प्रॉब्लम होते हैं तो वो कभी कभी बैठ करके पेशाब नहीं कर सकते हैं, राइट, वो खड़े होकर के ही पेशाब करते हैं, उनके बहुत सारे चारों तरफ के रास्ते में पेशाब हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या चैलेंजेस होती है? तो चैलेंजेस सबके लिए किस तरीके से आप देखोगे, वो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका पेशाब अगर चारों तरफ आ रहा है या एक धारा में जा रहा है उसी से देख करके आप डिफाइन करोगे कि ये हमारे यहाँ इधर पेशाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन ये भरा हुआ है कि वो हमारा प्राइवेट पार्ट देखेगा। प्राइवेट पार्ट क्या चीज़ है? जो पुरुष बोल के आइडेंटिफाई करते वो इतना छोटा कपड़ा भी पहनते हैं और नंगा भी घूम जाते। अगर औरत नंगा घूम जाए तो वो लोग देखते वो क्या ऐसा, क्या क्यों देखते भाई? क्या जरूरत है? किसने आपको अधिकार दिया कि किसी का शरीर देखो, कपड़ा देखो, ये करो? नहीं देखने का। ये सब मन से जब निकल जाएगा ना तो भेदभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनरल थिंग है कि हम उस चीज़ को नहीं निकल चाहते हैं, हम बेनिफिशियरी मॉडल में जाना चाहते हैं कि डेटा है कि इतने लोग आए हैं, इतने लोगों को सर्विस देना है और इतने लोगों को नहीं, हमको सर्विस नहीं देना है। मेन चीज़ है कि डेटा से बाहर निकलना है और लोगों के दिमाग को बदलना है कि डेटा तो एक सर्विस डिलीवरी पार्ट का बेनिफिशियरी मॉडल हो गया, लेकिन आप लंबे समय तक अगर संस्कृतियों के परिवर्तन की बात करेंगे वहाँ पे डेटा वोटा की बात नहीं होती है। वहाँ तो हमने आपको बताया, आपकी मम्मी ने उनको बताया, उनके पापा ने बताया, उनके आने वाली जनरेशन को उन लोगों ने बताया। इस तरीके से संस्कृतियों का विकास हुआ। But it's a battle on many fronts. It's मतलब you have to continuously fight many battles on every front. चाहे वो सोसाइटी के फ्रंट पे हो, चाहे पॉलिसी के फ्रंट पे हो, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉलिसी मेकर्स उस चीज़ को जो है नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, आपने कहा संसद के अंदर जब तक बातें नहीं होंगी तब तक समाज में धीरे धीरे आएंगी कैसे? नहीं, जब भी बात करने जाओ तो वो पूछते कितने लोग। अरे भाई क्यों पूछ रहे हो कितने लोग? क्यों पूछ रहे हो कितने लोग? कोई तो होगा जो सोच रहा होगा कि नहीं भाई हम इधर कंफर्टेबल नहीं है। तो सोचो, डाटा से ज्यादा जरूरत पे जाओ। मैं ये जरूरत हो सकती है। एक बात बोलना चाहता हूँ, जब फिलहाल की बात है, जब मैं बहुत पहले जब नेशनल फोरम्स में बोलता था कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों मेनली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके काम नहीं हो रहा है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मतलब ऑफिशियल्स ने बोला है कि आपके वहाँ पे तो दिखती नहीं है, काउंट कहाँ है? आप अगर विजिबिलिटी के लिए काम नहीं करोगे, आप अगर कोई एक्शन, तो कौन निकल के आएगा वहाँ पे? राइट। तो जैसे मैं 2020 में गया, मैं अपने आई विल टॉक अबाउट द ब्यूटी पेजेंट जो मैंने किया मिस ट्रांसेनी, उसके थ्रू एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल के रोइंग जैसे इतने अंदर के गांव के ट्रांसजेंडर जगह निकल के आ पाए, मेघालय के एग्जैक्टली मेघालय नागालैंड के जैसे कैथलिक जहाँ पे क्रिश्चियनिटी इसको गलत मानती है, लेकिन आफ्टर द पेजेंट पूरी क्रिश्चियनिटी ने इसको अपनाया, नागालैंड की पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस दिया। तो आपने क्यों ये सब मूवमेंट तब नहीं क्यों बिल्ड किया कि अगर दिल्ली मुंबई ये सब शहरों में ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, क्यों इन सब जगहों में नहीं हो सकती है? ऐसा तो कोई है नहीं ना कि ये कोई जगह जगहों को लेके ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे। अब देखो पूरी गुवाहाटी में तो भर भर के कम्युनिटी निकल के आ रही है, हर दिन एक नया रजिस्ट्रेशन होता है। अब 30 दिन में अगर 30 नया ट्रांसजेंडर का क्लाइंट रजिस्ट्रेशन हो रहा है ओएससी में, तो इट्स अ ह्यूज काउंट। It's a huge count nonetheless. I'm cutting you Palar, sorry for that, but why do we even have to go into numbers? Exactly. It's only why in our country that we have to go into numbers कि हाँ भाई इतने होंगे तभी कोई स्टेप लिया जाएगा। जैसे कि रेशमा जी ने कहा भाई कितने हैं। I mean I think a few months ago I read about a report about a small village in Japan जहाँ पे सिर्फ एक लड़की को लेने बस जाती थी उसके गांव, क्योंकि उसको कॉलेज जाना होता था, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। एंड आफ्टर शी ग्रेजुएट्स वहाँ पे वो कनेक्टिविटी ख़त्म करके शायद मेट्रो या कुछ शुरू किया जा रहा था। सो आई सेड वाओ, दिस इज हाउ इट शुड बी, राइट? इवन इफ अ वन पर्सन हैज़ टू कम फ्रॉम द एंटायर विलेज, वी विल सेंड अ बस बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी। I won't say that कि कितने लोग हैं तब मैं जाऊँ। System that needs to The be system. responsive to individuals' needs, and Absolutely. that should be the
benchmark for really, you know, right. The quality system should of be care in and place. I mean, nurturing. obviously we have made a lot of progress. और ये शायद आप सब लोग की अपनी respective fields में अपनी जो आप लोग जंगें लड़ रहे हैं, the battles that you guys are fighting, we have seen so much of change, and probably this is itself a change that we are having this series of podcasts. Because you tell me 10 years ago, 15 years ago, were we even willing to talk about these topics openly? That No. is what. But thanks to social media, thanks to the this generation also that we're talking about, and probably if you're talking today, जैसे आपने कहा बोलना जरूरी है, तो उसका automatically it will lead to action. So now नहीं, मजबूरी की दीवार बना करके आप कोई भी चीजों को आसान नहीं समझ सकते हैं. मजबूरी की दीवार तोड़ो, बोलो बोलो बोलो, उसके बाद आपको जरूर दरवाजे खुलेंगे. जो भी जकड़नों के दरवाजे हैं वो खुल के रहेंगे, और उन दरवाजों में हमारी उपस्थिति एक अच्छे तरीके से देखी जाएगी. क्योंकि जब लोग बोलना शुरू किए तो वहाँ से रास्ता, जमीन, आसमान सब कुछ शुरू हुआ. मतलब HIV की जब बात होती थी तो इतना मार्जिनलाइज महिलाएं और इस तरीके से बात नहीं हुई. जब लोग बोलना शुरू किए कि नहीं भाई, ये रास्ते को थोड़ा और देखो, ये रास्ते को थोड़ा और देखो, तो वो बदलता चला गया. तो बोलना तो जरूरी है. हर गांव में बोलना, हर शहर में बोलना, हर देश के हर एक कोने कोने में बोलना, हर जगह में बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे कि हम हैं और हमारे अधिकार हैं और हमारा जीवन है. आपको स्वीकारना है या नहीं है, हम स्वीकारने के रास्ते को बना करके और रखेंगे. सबसे बड़ी बात, हमारा अस्तित्व है. हम हैं, हमारा अस्तित्व भी है भाई, क्योंकि पहले तो आप उसी को रिकग्नाइज करें. एंड मेरे ख्याल से शायद इसीलिए उस मशहूर शायर ने, फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, क्योंकि इन लबों पे तो कोई ताला नहीं लगा सकता, और गोली से ज़्यादा बड़ी होती है बोली. एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रैप ऑफ आवर सीरीज, बट आई वुड लाइक टू ask each one of you, and starting with Suthirtha, what is your vision for the PWID community, and what is the way forward that you feel that would probably address the gaps that you mentioned? Firstly, I'll come to the PWID. PWID refers to people who inject drugs, and this is a very small community within the people who use drugs community. Since HIV is there, HIV is infected through sexual contact and injecting routes. We consider these people as one of our target populations, and we cater to them. What about the people who use drugs, which is a much bigger population size in the country? Right. What about their sexual needs? Right. Are they not doing sex when they are having alcohol or any other kind of drugs? We start thinking that a person goes into drugs and stops having sex. That's not true. So we are actually leaving out a majority of the population which might be vulnerable. We do not have evidence. We cannot say whether there's HIV infection or any other infection within that community as well. Once we start, we will get to understand. So first is, I think they should be included in the programs, in the policies. But the other bigger problem is that the act which controls drugs in the country, it's called the narcotic. NDPS, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, which has undergone 3 revisions in 2014. It has the last amendment. Still, a drug user having a small quantity of drugs or paraphernalia, not drugs. Even if you have paraphernalia with you, you are a criminal. Right. So we have to stop thinking that criminalizing people. We have to decriminalize first. We have to bring that system in I mean, I'm not saying that you stop supply management or supply the production and manufacturing. Do everything. Everything has to be done. As everything has to go hand in hand, and at the same time, you have to also see that who is a sufferer, who is a victim, and who is a perpetrator. You cannot treat everybody in the same boat. Mostly the perpetrators are not from PWID. Exactly. They are the ones who are making profit. Yes, absolutely. They are the smugglers. They are making money. They are not drug users. Absolutely. But then the people who are suffering, you are putting them in the same boat, and then you put them into a 6 months jail or a 1 lakh rupee fine. How the person is going to come out? Can a drug user come out and say that I'm a drug user and I need help? No, because it is illegal. Reshma ji is from Bihar. Bihar banned alcohol. I think in 2017 or 2018 they banned alcohol. Where are those existing drug users gone? Did they come out in the open and say?
The moment a person comes out and say that in Bihar, if they say I need help, they will first, the police will charge कहाँ से मिला तुमको alcohol, and then उसको तो जेल में डाल दिया जाएगा. So people will be scared. People will not come for health services until and unless you are supportive. That's a very, very important point. I must say that in order to reach out to people, we should have a willing and listening ear as well. And अगर वो पहले से prejudice से भरा हुआ जिसको seek कर रहे हैं, that person is already prejudiced, or the legal system is like that, that's making everybody biased. I think that's a very valid point. Criminalization of the community Yes. जो एक बहुत बड़ा विषय है. Right. और हमारे देश में एक मतलब हर एक कोई मार्गलाइज जो भी है जिस स्थितियों में है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, उन सभी जगहों पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज कौन किसके होती है उसको देखना जरूरी है. क्यों ऐसा होता है द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज कि जो लोग ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट जो थोड़ा मार्जिनलाइज हैं उनको उनका क्रिमिनलाइजेशन आप देखेंगे, जो जेंडर पे ये हैं उनका क्रिमिनलाइजेशन देखेंगे, जो सेक्सुअलिटी पे देखेंगे. इसी तरीके से PWID के लिए भी इसी तरीके की बात है. तो पहले तो क्रिमिनलाइजेशन एंड क्रिमिनल सोसाइटी का जो अवधारणा है कि जैसे चरित्रहीन और चरित्रवान, ये शब्दों को किसने बनाया? उसका हक है किसी को दूसरे को चरित्रहीन या चरित्रवान करने का. राइट. तो ये चरित्र के निर्माण की दिशा को कैसे समझा जा सकता है? बाध्यताओं के जो जंगल है उसको खत्म करो और लोगों को आपराधिक प्रवृत्तियों के दिशा को जो दिया जाता है कि नहीं भाई ये आपराधिक हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और उसी से जीवन का एक लक्ष्य सभी को मिल पाएगा. बिल्कुल. तो रेशमा जी, अगर संक्षेप में आप बता पाएँ हमारे लिसनर्स को सबको कि आप क्या विजन लेके आगे, आप क्या देखना चाह रही हैं, क्या आप देख रही हैं? या तो नहीं, आपने बोला ना किसी ने बोला कि बोल की लब आज़ाद है. नहीं, हम बोल की लब आज़ाद हमें कहना ना पड़े, हम आज़ाद हैं और इस आज़ाद देश के नागरिक हैं. आपको बोलना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा और इसे झेलना भी पड़ेगा कि नहीं भाई उसको बताया उसके बाद भी ये बातें उसकी झिझक रहेंगी. आपको बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम खुद ही नहीं अपने आप को रियलाइज़ कर पाते कि हु एम आई एंड हम किस रास्ते पे चल रहे हैं खुद स्वयं के लिए. तो इन जैसे बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ, कि सभी के लिए मेंटल हेल्थ ये होता है. तो मेंटल हेल्थ में क्या करते हैं? काउंसलिंग. और काउंसलिंग का आइडियाज़ किस तरीके से आता है? वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं नहीं तो वो कैसे आपसे जुड़ पा रहे हैं? तो आप अपने आप को समाज को कैसे जोड़ रहे हो कि जब आप बात नहीं करोगे, आप सोचोगे कि एकदम इंट्रोवर्ट आइडिया में हमको फ्रीडम मिल जाए. तो मुझे लगता है कि समाज को अभी खुद ही तैयार करने में हमारी भी तो जिम्मेदारी होती है. जैसे कहा जाता है कि पहले बोलो, फिर फेस करो, फिर आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता बना दो. आगे आने वाली जनरेशन, जैसे महिलाओं के लिए 200 साल में बात किए, आज के समय में सब जगह बात हो रही है, हर एक जगह पे. अब पहली महिला नहीं देखी जाती है, कितनी महिला, अब तो संख्या देखी जाती है कि इतनी महिला आई. तो पहली महिला से, पहले ट्रांसजेंडर से, पहले पुरुष से, पहले ऐसे व्यक्तियों से बाहर निकलने की जरूरत है और बोलना होगा. Absolutely. Now coming back to Anandi ji, what is the way forward? What is the you can say euphoria, जो एक word है, utopia, in fact not euphoria, but the utopia that you imagine, what is that? Yeah, so in terms of, I don't know whether I really want to say it's a vision for people living with HIV or the HIV movement, because if you really look back and people in the HIV have been, at the forefront in leading the movement, HIV movement, and they, have brought the HIV, medication prices down and access, and they have fought for many, issue related to the HIV, whether it's stigma or access, and so I see they have done quite well, in terms within the HIV sector. Right. But then I really want to see them like go beyond HIV sector and penetrate into the other, non-HIV platforms and health and broader health movement and other social and justice, platforms where they can influence, and that would really take them, kind of a long way. And that requires a lot of commitment and require resources for them to really do this, do this job and,
implement their vision. And so I really see that Resma ji and Palesh and everybody talk about, yes, identity. I really see all these movements and different communities, they should move beyond identity politics. They really need to look at the issue-based politics. Access is an issue, and many issues and schemes and insurance. The many things are unfinished agenda we still have. Resources for the CBOs, and those are the areas, issues, and that we need to come together and fight, and that is my vision for the community. Absolutely. HIV इस तरीके का है कि ये पूरे विश्व में एक मतलब भेदभाव का बहुत बड़ा यंत्र बना हुआ है. तो अगर हम वैक्सीन लेकर के आएंगे तो इस भेदभाव के यंत्र को खत्म कर पाएंगे. Right. Palash, what about you? I think like after all this conversation, हमने सबने जो बात किया, I think the most thing that we all should keep is transparency. एंड अगर हम चीज़ों को लेके अपनी आवाज़ों को लेके हम ट्रांसपेरेंट रहे, हम लोग बोल रहे, आई थिंक बहुत बदलाव आ सकता है. और रही बात HIV की, आई थिंक हमने बहुत रोया है HIV को लेके. लाइक HIV अभी इतनी भयानक नहीं रह गई है जो होता था. अगर हम आज HIV को लेके अनडिटेक्टेबल इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल वाला अगर हम कोड लेके और उसका पूरा जो CDC ने डिक्लेयर किया है, इफ़ वी टेक इट फॉरवर्ड, शायद से बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन कम भी हो जाएगा और लोग आगे आएंगे भी टेस्ट करवाने के लिए, मेडिसिन चालू करने. लेकिन वी डू नॉट टॉक अबाउट द गुड पार्ट्स ऑल्सो एट टाइम्स. So it is high time that that everything needs to also go with a positive message and acceptance, self-acceptance, being vocal about your own issues, not to like be someone and then hide behind a curtain and try to ruin someone's life just for your own benefit. ये सब अगर हमने बंद कर दिया, ट्रांसपेरेंसी रख के हमने काम किया, तो आई थिंक दुनिया मतलब एटलीस्ट हमारी कंट्री में बहुत, अगर हम चारों व्यक्ति यहाँ पे आके इतने कुछ we have contributed. If everyone out there they contributes to just something in and around, so it will make a huge difference. And if it is World AIDS Day today, then I would only say कि discrimination is just, it's like the biggest disease that you are carrying. Stigma is the biggest disease that you are creating. Break this taboo, come out of it. Every individual is equal. So I mean, you will just live and die one day. You are, हाँ, आपको बस मरना ही है. उसी में ही अगर घिना भाव, अगर डिस्क्रिमिनेशन ये सब लेके बोझ लेके आप रहोगे तो क्या ही रह जाएगा. सबके साथ घुल मिल के रहो, ट्रांसपेरेंसी रखो और सबको अपनाओ. That is what is my mantra, and that is what I feel future should also be. Right. Thank you so much everyone for being with us today. I think not just me, I think all our listeners have got so enlightened. और मैं जैसे कहते हैं हमारी हिंदुस्तानी भाषा में दिमाग के पर्दे काफ़ी खुले आज की इस कॉन्वर्सेशन से. थैंक यू ईच वन ऑफ यू.